Let's have a look at the students' learning outcomes. After completing this unit, students will be able to pronounce and practice simple words with more silent letters such as B in lamb. Use appropriate expressions in conversation to respond to instructions and directions. Use polite expressions to seek attention. Recognize specific parts of words, including common inflection endings and compound words. Inflection endings पर इससे पहले मुझे याद है ऑनरेबल टीचर में बात कर चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैं इसको रिवाइज कर दूँ. इन्फ्लेक्शनल भी इस्तेमाल होता है और यहीं से मैं आपको मिसाल दे देता हूँ कि इन्फ्लेक्शन वर्ड है. अगर हम इससे इन्फ्लेक्शनल बनाते हैं तो फिर ये जो एन के बाद ए एल है ये एंडिंग है, लेकिन इसी को कहेंगे हम इन्फ्लेक्शनल एंडिंग. Locate specific information in a calendar and class timetable. Recognize the information presented in a pie chart and bar graph. Identify and utilize effective study skills. For example, brainstorming for ideas, using illustration and note taking. Brainstorming का आपको पता है पहले से, यानी हम बच्चों को कोई एक क्वेश्चन रेज करते हैं, उनके सामने कोई सब्जेक्ट रेज करते हैं और वो फ्रीली अपने आइडियाज देते हैं और फिर हम वो आइडियाज या पॉइंट्स हम लिखते जाते हैं राइटिंग बोर्ड पर और फिर उनको सिंथेसाइज करते हैं. यानी अगर एक आइडिया पहले से आ चुका है और किसी दूसरे बच्चे ने भी वो आइडिया दे दिया है तो हम उनको ये बताते हुए कि भाई ये आइडिया तो पहले से है, हम वो नहीं लिखते और यूं जो जितने मेन आइडियाज़ हैं हम उनको लिख के सिंथेसाइज कर देते हैं, यानी फालतू चीज़ें निकाल देते हैं. और ब्रेनस्टॉर्मिंग बहुत अच्छी एक्टिविटी है. इनसे बच्चों की थिंकिंग स्किल बेहतर होती है और स्पीकिंग स्किल भी बेहतर होती है. Create a short poem using the suggested rhyming words. Locate, identify, differentiate between, and use some simple pairs of words, including homophones, एक आवाज वाले words. Recognize and locate some compound words from various text sources. For example, butterfly, football, bus stop, homework, classroom, and whiteboard. Break some common compound words into parts they are made of. Locate difference between the two parts of a compound word. Use common compound words in speech and writing. Identify the use of verbs be, do, ing, and along with their negative form as helping verbs. Distinguish between be, do, and have as main and helping verbs. Identify and write the central idea of a given poem in simple language. And list rhyming words and write a poem.